Okay, tell me why different banks give you different kind of credit limits. Multiple reasons. One, पर एक सेम ही प्रोफाइल है, ठीक है. और मैं बड़े बैंक्स की बात कर रहा हूँ, मैं छोटे बैंक्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि स्मॉल बैंक्स यूजुअली अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल आइडिया. लेट्स से क्रेडिट कार्ड, राइट. 3 बैंक्स है, मेरे साथ भी हुआ है. HSBC, अमेरिकन एक्सप्रेस, HDFC. तीनों टॉप है, तीनों टॉप क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर्स हैं, तीनों के पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के पास टॉप कार्ड्स भी हैं, राइट. HDFC देता है 15 लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट मेरी प्रोफाइल पे. व्हेन आई स्टार्टेड, सेम प्रोफाइल पे डे 1 पे स्टार्ट करते थे. HSBC देता है 35 लाख की लिमिट, अमेरिकन एक्सप्रेस देता है 30 लाख की लिमिट, राइट. तीनों की लिमिट अलग अलग है ऑन डे 1. आई गेट इट कि 1 साल बाद 2 साल बाद मेरा जितना पैसे बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगी, अकाउंट बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है. एंड इट गोज टू क्रॉस व्हाटएवर, जितना जिसकी भी लिमिट होती है, जितने पैसे बढ़ते हैं, दे डू इट दैट वे, राइट. बट डे 1 पे जब आप अप्लाई करो, तीनों के पास मेरी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, तीनों को नहीं पता, बस मेरी इनकम स्टेटमेंट पे 3 अलग अलग क्रेडिट लिमिट्स क्यों मिलती है? Because there are 3 factors. One is banks' risk taking ability, their risk exposure, and number 3, their way of profiling you. You said, the last bank which was giving you more loan. The reason is they consider you in a different category because their understanding towards you is different and they want to take a larger risk, to be very frank. Second bank, what you said, they are in between. They are like risk averse and not risk takers. So they are like, they want to play safe. They don't want to give more, not less, because the reason is they want to take a chance with you. If you see, again, age group also matters, right? See, everything comes at I'm asking you, HDFC, HSBC, Amex, तीनों के प्रोसेसेस बहुत वेल डिफाइंड होंगे. तीनों बहुत बड़े बैंक्स हैं, राइट. एंड तीनों का ऐसा नहीं है कि हम छोटी सी कंट्री में कहीं पे कुछ हैं. तीनों बहुत लार्ज हैं इन देयर ओन गेम्स. स्टिल द रीजन बीइंग इज तीनों का अप्रोच बहुत डिफरेंट है. तीनों लाइक बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है. व्हेन यू टॉक टू देम इज़ डिफरेंट, व्हेन यू अंडरस्टैंड देयर प्रोसेस इज़ डिफरेंट. जब आप उनसे बात करते हो, एक दिन में जो चीज़ इनेबल करते हैं, वो तीनों बहुत अलग अलग चीज़ें इनेबल करते हैं. सही. सो व्हाई इज़ दैट? प्रोफाइल तो एक ही इंसान सेम है, जज करना है तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है ना. करेक्ट. इतना डिफरेंस इसलिए आता है. हाँ, कि मतलब भाई ठीक है, 5 लाख दूंगा तो मैं 6 लाख दूंगा, मैं 7 दूंगा. 5 का 50 लाख, इट्स दैट, राइट. इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन you can only do, let's say, 10-15 lakhs in HDFC, but you can do 35-40-50 lakhs in HSBC, right? A crore in Amex. तो single day transactions में इतना differences क्यों है? Same profile पे. Same. And also if you see, every bank gives you a different limit of transaction. You heard that? हाँ. Limit is okay, I get it कि bank. You are same person. You are means for example, you have XYZ company. That company has same balance sheet. हाँ. Same documents, you open in same 3 different places, but every bank has a different per day limit, per quarter limit, per limit. So why is that? So I'm just combining these 2 things because their risk taking appetite and their methodology of assessing you is different. So for example, I'm telling you about a very conservative bank. They will tell, आज first day आप only 25,000 कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो. भले कुछ भी हो, यानी कि आपके पास 20 करोड़ भी हो, you can't do more than 25 transactions. So then there's one more bank which will tell, day 1 you can do 50,000. For example, DBS Bank is there, Singapore based. So the limits are like insane. I know. Why? Piyush sir crazy. And that same limit applies even for an Indian customer. It is not that it's for a customer who is based out of Singapore or Hong Kong. It is for the same, even in India, same limits apply because their banking methodology is very different. The reason is they know how to take risk. I'll tell you why. They are they're one of the bank in terms of technology. They're the forefront runner. Yeah. Heavily invested, and probably they're one of the best tech team in the world for that matter. Even fintechs might fail, they might not fail, and they're very secure in terms of it. So what they do, they have mitigated the risk in a very beautiful way. So whether it is for limit, whether it is for giving a more credit, they have understood a profile, and they have incorporated new mechanisms to recover the funds using your profile. See, giving a limit is slightly different because in the limit, what happens is your money. Your money is going out. In the time, in the point of a credit card or this thing, where the money, it's the bank's money.
तो बैंक का मनी आप स्पेंड कर रहे हो, तो वो जानते हैं कि ये बंदे को अगर हम ज़्यादा देंगे तो स्पेंड करेगा, let him do for sure, and they also know how to recover. So that recovery mechanism what they have made is very well defined, because the touch point is the same PAN card only. See, for example, today in any bank where you want to go and apply a loan, first thing they ask is what? PAN card, because every financial data is connected to the PAN card, and it can't go wrong. Then comes your, the other, document like your, passport and your, CIBIL and all. That gives you a fair understanding who you are. But whatever you have done, how many bank, see, if you give a PAN card number, you can make out how many bank accounts you have, where all you have money. You can make out that. So their understanding is slightly different on the first bank. They see this guy has so much, so let us take a risk. And risk appetite of those banks are larger. You talk about Citibank, which now again it's in India got merged with Axis. So you take a name of HSBC Bank. They are well ahead of taking a risk. They're the biggest in the world, right? And that is why they are biggest. If you take about, again it might be a wrong example, JP Morgan, their way of working is completely different. You take a name of Chase, their way of working is different. So they are so huge and among us, for them this looks very tiny. So what happens when your portfolio and your exposure is too much, हो सकता है कि आपका जो प्रोफाइल है ना, फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसको कहेंगे हम कैटेगरी 8 एग्जांपल, देयर आर लाइक कैटेगरी 30 कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट पर्सोना, आप कैटेगरी 8 में बैठते हो और उनके पास कैटेगरी 100 है. तो when they compare you 8th category among that 100 categories, you are like very tiny in front of दो यार, उसको जो देना दो. क्या कर लेगा, ले जा. एक बार तू ले जा यार, 1 करोड़ ले जा यार. ट्राई कर लो. सो देयर असेसमेंट इज ऑन अ ग्लोबल स्केल. थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए. अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.